എന്താ കാര്യം ഒന്നും ആർക്കറിയാം. എന്താ മൈ Yes, Kunal, start. Life is a book as quoted by APJ Kalam sir. Some chapters are sad, some happy, some exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds. Good evening. Namaste. This virtual meet is coordinated to embellish and to spark on the burning sensational topic that is radiation, the silent killer. So today we all have gathered, and of course, I believe you all are excited and elated to be the part of the steering platform of Zoom. I, Kunal Parmar, welcomes the gallant organization St. Xavier's English School Mundra, which is a co-education institution run by the Catholic minority community. The school is managed by the revered father of the Carmelites of Mary Immaculate and by the revered sister of the Congregation of Holy Family. St. Xavier's education endeavors aims of forming leaders who are intellectually competent, spiritually mature, morally upright, and psychologically integrated, physically fit, and socially acceptable, who will be the champion for the cause of justice, love, truth, peace, and open for the future growth. The institution also acknowledges student-focused academic approach and make learning more interactive and participative. School always strives to foster and inspire children to be the bold explorer and a joyful, confident learners for their life. So first to welcome the St. Xavier's organization Mundra, the father, sister, and all the teaching staff member. And I believe you all will be a delirious for this virtual meet. Welcome school, welcome in this live fascinating Zoom. So look at the sparrow. They do not know what they are going to do in the next moment. So let us literally live from moment to moment as dictioned by Mahatma Gandhi. Next, we have our presenter for today's session, Mr. Gurubaksh Tarachandani sir, who is a regional manager in West Company's Synergy Environic Limited. At present, he is handling and conducting product training in the West region, that is Mumbai, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, and Goa since last more than 2 years. We welcome you, sir. Thank you so much, Kunal. Thank you so much, sir, for a warm welcome wishes. So, the topic of today's session indicates how much radiation is dangerous and threatful for us, but we always underestimate it.
We always speak about the major issues of environment like land pollution, air pollution. But my question is land and air pollution the biggest challenge? Think it again, think it wisely. The radiation generated from the electric appliances is affecting human body as well as environment and disturbing our ecosystem. As Mundra is a industrial town, a port town, so many towers are situated, many industries are situated in Mundra. So the radiation is present in our environment. And in this pandemic situation, we all have adopted a new lifestyle, a new working lifestyle, that is a work from home. And adults are working from home, students are learning on online medium of learning. Students, even the junior kg students are using computer, laptops, mobile phones, and these gadgets are no more any luxurious item, they are the basic amenities. We cannot stop using those amenities as the world will stop. And with the threat of this radiation, we cannot stop using, or the emission of the electromagnetic gadgets from the rays which are coming from these gadgets, we cannot stop it, but at least we can change the nature of radiation. So now let me invite our presenter of today's session, Mr. Gurubaksh Tarachandani sir, to induce on the discussion. Over to you, sir. Thank you so much, Kunal, for such wonderful, that speech which you presented over here and so wonderfully explained. In fact, I don't think I have the need to be, giving out the presentation over here or creating an awareness. You yourself had given so much of important messages over here through your particular this speech over here. So thank you, Kunal, for inviting me. And good evening, friends. My name is Gurubaksh Tarachandani. I'm from Mumbai. I work with this company, which is Synergy Environics, based in Gurgaon, near Delhi. And I'm working as a regional manager for West Region. In the West Region, of course, as Kunal already said it to you, I conduct trainings and regularly for the corporates and schools, institutions, colleges everywhere. And in this West Region, I take care of Mumbai, Maharashtra, Gujarat, MP, Goa completely. And today I'm obliged and I'm privileged to have a training session with all of you over here, a small awareness program regarding harmful effects of radiations because of the things currently which we are using in this particular today's digital world, digital life. Let me introduce to you how this technology is helpful to us, but how the harmful effects of this technology are causing harm to our body. So जब कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी जिसका फायदा भी है और नुकसान भी है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा है तो नुकसान भी है। तो उसी तरह से फायदा तो हम सब ले रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़कर, ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल्स, ट्यूशंस अटेंड करके, पर उसका जो दूसरा पहलू है जिसका नुकसान जो हमारे शरीर पर है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। सो आई विल जस्ट स्टॉप माय कैमरा एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड यू विल बी एबल टू हियर माय वॉइस and I'll be go ahead with this particular presentation. So allow me, Kunal, to share the screen. Yes, sir. Thank you. So this presentation will be a mix of both Hindi and English. I'm sure you all would be comfortable with this. So let me just start. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, electromagnetic radiations, a health challenge. Kunal already has discussed these things. Ki, do we really think air pollution is one of the biggest threat? Do we think water pollution is one of the biggest threat? Of course they are, but at the same time, in today's world, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का पूरा जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो उसका नुकसान हो रहा है, उसके जरिए pollution हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रेडिएशंस का pollution. जी हाँ, which is commonly called as electrosmog. We are all aware of the word smog, right? But electrosmog is nothing but dirty electricity और radiations का जो pollution, जिसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे, उसके awareness आपको देंगे कि क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे शरीर पे और हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि हम पिछले एक साल से more than last 1.5 years we are using all these things in the corona pandemic, which is face mask, hand gloves, sanitizer. It has become a new normal for us, right? न्यू नॉर्मल है हमारे लिए ये फेस मास्क, हैंड ग्लव, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना। क्यों? बिकॉज कोरोना से बचने के लिए, बचाव करने के लिए हमें ये सब चीजों की जरूरत है, यानी कि सावधानी बरत रहे हैं। तो जैसे घर के बाहर एक दुश्मन है ना कोरोना वायरस,
के अंदर भी एक दुश्मन है और वो है रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस क्या है? रेडिएशंस बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, टैब्स, लैपटॉप्स, वाईफाई, बेबी मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्ट टीवीज, ये सारी चीजें भी हैं। ये सारी चीजें जो है वो होते हैं बिकॉज वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसी में से निकलते हैं और ये रेडिएशंस हमारे लिए नुकसानदायक हैं। दे आर हार्मफुल टू अस। इन house we have all this electronic gadgets which we are using on our daily basis and that too टाइम, राइट। घर के बाहर अगर देखें तो घर के बाहर हाई टेंशन केबल लाइंस हैं, मोबाइल दैट इज इलेक्ट्रिक केबल लाइंस, मोबाइल फोन के टावर्स हैं, ये सारी चीजें भी घर के बाहर मौजूद हैं। एंड इन द लास्ट 10 years और सो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, ये मोबाइल फोन टावर्स जो पहले सिर्फ रोड्स पे, सड़कों पे हुआ करते थे, now they are installed on the top of our terraces, buildings, terraces, neighborhoods, houses, everywhere। यानी कि ये सब आसपास में सब जगह पे मौजूद है। अब सोचिए कि जब हम इतने नजदीक हमारी रेडिएशंस हैं आसपास में सब जगह पे, घर के अंदर, घर के बाहर, तो इनसे कैसे बचा जाए। जी हाँ, इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो अब जब हम ऑफिस में काम कर रहे थे प्रायर टू कोरोना पैंडेमिक, ऑफिस जब हमारे जा रहे थे तब हम रोज ऑफिस में काम कर रहे थे एवरीडे 8 to 10 hours और मंडे टू सैटरडे। ऑफिस का ये जो एक लेआउट देख पा रहे हैं जहां पर सारे वर्क स्टेशन, डेस्क पड़े हैं, कंप्यूटर्स सब जगह पे, मोबाइल फोन, लैपटॉप तो सभी के होंगे इंडिविजुअली, फिर वो रिसेप्शन एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, सब जगह पे तो लोग काम कर रहे हैं। तो इतने सारे रेडिएशन पॉइंट्स पूरे एक ऑफिस में मौजूद है। Example, if there are 50 people, 50 employees working in an office, there are 50 mobile phones, 50 laptops individual। सोचिए पूरा रेडिएशन कितना फैला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड देन वी आर आफ्टर वर्किंग फॉर 8 to 10 hours मंडे टू सैटरडे, वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। हम घर में भी रेडिएशंस मौजूद हैं, तो 24/7 ऐसे रेडिएशन से घिरे हुए हैं। अगर देखा जाए तो वी हैव दिस रेडिएशंस एट आवर होम ऑल्सो। खुद के गैजेट्स तो हैं ही, पर साथ ही साथ हमारे जो नेबर्स हैं जो अपने घरों में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, उनमें से निकलने वाले रेडिएशंस भी हमारे घरों में सिग्नल्स मौजूद है। इफ यू कैन सी द स्क्रीन, you can see I have purposely given you this my image of my laptop where जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे ही लैपटॉप पे जब मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूं तो मेरा होम नेटवर्क जो कनेक्टेड है, उसके अलावा मेरे आसपास के नेबर्स जो हैं जो अपने घरों में वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, वो सारे सिग्नल्स मेरे लैपटॉप पे इस तरह से स्कैन हो रहे हैं, यानी कि डिटेक्ट हो रहे हैं। अब अगर मेरे घर में ये सिग्नल्स मौजूद हैं, यानी कि मैं इस रेडिएशन के बीच में रह रहा हूँ, दिस कुड बी विथ योर मोबाइल फोन एज वेल, अगर आप मोबाइल पे स्कैन करें या फिर लैपटॉप पे या टैब पे, तो सोचिए हर एक के घर में एक दूसरे के सिग्नल्स मौजूद हैं वाईफाई के, और हम ऐसे ही रेडिएशन के माहौल में रह रहे हैं। दिस वाईफाई कनेक्शंस आर अवेलेबल इन अवर होम एज डिटेक्टेड एंड दिस आर द सिग्नल्स दैट आर कमिंग फ्रॉम neighborhood and surrounding where they are using their Wi-Fi networks. Imagine we staying in an environment where we are surrounded by so much of radiations around us. That is what हमें लोगों को ये जानकारी देनी है, अवेयरनेस देनी है। The kind of radiations, pollution जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रेडिएशंस के पोल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग। जी हाँ, एक ऐसा पोल्यूशन है रेडिएशंस का जो ना हमें दिखाई दे रहा है और ना ही महसूस किया जा सकता है, which is invisible and insensible. That is, we neither can see it or feel it. और कहाँ से आ रहा है? Because of mobile towers, high tension cable lines, mobile routers, boosters, ये सारी जगह से ये रेडिएशंस का of course pollution। बताइए कि एयर पोल्यूशन, जो हवा में जो पोल्यूशन है वो हमें दिखाई तो दे सकता है, ऑफ कोर्स हमें कचरे दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर हमें सिगरेट स्मोकिंग का धुआं, गाड़ी के साइलेंसर्स में से, व्हीकल साइलेंसर में से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, फैक्ट्रीज में, चिमनीज में से जो धुआं निकल रहा है, वो सब हम देख पा रहे हैं, एक प्रकार का पोल्यूशन खुली आंखों से। पर क्या रेडिएशंस का पोल्यूशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है इनविजिबल और इनसेंसिबल। एंड व्हेन 24/7 वी आर सराउंडेड बाय सच रेडिएशंस, इट इंपैक्ट अवर हेल्थ, हमारे सेहत पे इसका असर होता है। व्हेनेवर मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पीक टू मेनी people, some believe, some do not believe. It's absolutely fine, but I'm just creating an awareness over here. If suppose this radiations were visible, then सोचिए कि ये radiations दिखाई देते तो कैसा होता। What you can see on the screen is an image of a city जहां पर there are buildings, commercial and of course residential towers. Mobile towers are installed on the roads as well as on the building towers and everywhere terraces, and you can see so many network of signals, यानी कि पूरा का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। और ऐसे ही जो जाल बिछा हुआ है ना, इसके बीच हम रह रहे हैं, सॉरी रह नहीं रहे हैं, फंसे हुए हैं। जी हाँ, कहना सही शब्द होगा, बिकॉज जब हम ऐसे सिग्नल्स के बीच फंसे हुए हैं तो क्या आपको इसमें से निकल के बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है?
नहीं ना, नहीं दिखाई दे रहा है। सोचिए, और यही चीज है कि जो लोग मानने को तैयार नहीं है तो उनको ये बताना जरूरी है कि हम ऐसे रेडिएशन से रह रहे हैं। ये सिर्फ एक शहर का मैंने आपके साथ शेयर किया इमेज, सोचिए पूरी दुनिया में सभी देशों में इस प्रकार का पूरा सिनेरियो है, और जब हम ऐसे रेडिएशन से रह रहे हैं तो इसका नुकसान तो हो ही रहा है ना, 24/7 इट इज इम्पैक्टिंग अवर हेल्थ। अब ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, कई लोग मैं कहते हैं कि हम लकी हैं कि हम ऐसे चीजों से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं कहता हूँ हम अनलकी हैं, क्योंकि जब ये चीज दिखाई नहीं दे रही ना तो इसके लिए काफी बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हैं, अवॉइड करते हैं या ध्यान नहीं देते इन चीजों से, और इसकी वजह से होने वाले जो नुकसान हमारे शरीर पर हो रहे हैं, impact that is causing on our health because of this radiations 24/7. There are some health problems which are in the short term, maybe in small period of the health problems which are in the longer period of time. Small term health problems यानी कि short term में it could be headaches, memory loss, irritation, sleep disorder, that is bad sleep quality, insomnia, which is observed in each and every family, each and every homes you can see. हर एक घर में ऐसी चीजें मौजूद हैं, पर हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? द रीजन इज हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल है ना, मेरे अकेले के साथ थोड़ी ना हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है और कॉमन समझते हैं, इसके लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते। पर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऑफ कोर्स जैसे कि आज के वक्त में न्यू नॉर्मल है सोशल डिस्टेंसिंग, ऑफ कोर्स उसके अलावा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ ऑफ कोर्स मास्क का इस्तेमाल करना, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना, ये सारी चीजें तो ये सारे न्यू नॉर्मल्स बन चुके हैं हमारे लिए। तो उसी प्रकार ये भी न्यू नॉर्मल है कि ये सारी चीजों को अवॉइड न करें, बिकॉज आज छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स कल को कब बड़ी बीमारियों में बदल जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। इफ यू लुक इनटू द लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, छोटे अरसों से लेके मतलब कुछ महीनों से लेके साल भर में होने वाले, इट कुड बी 1 year 2 year 5 years और 10 years डाउन द लाइन, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स। और हम तो मोबाइल पिछले 20 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 सालों से, जब से मोबाइल 95 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो सभी लोग तो ऑफकोर्स उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जैसे कि कुणाल ने राइटली सेड कि मोबाइल फोन इज नॉट अ लग्जरी आइटम राइट नाउ। क्यों? बिकॉज 1995 में जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए थे ना, तो मोबाइल फोन्स बहुत कॉस्टली थे, एक्सपेंसिव थे, उसका कॉलिंग रेट्स, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स बहुत महंगे हुए थे, एक्सपेंसिव थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसके पास था वो स्टेटस सिंबल था, लग्जरियस आइटम था उसके लिए चीज। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज देयर इज अ मिनिमम मोबाइल वैल्यू ऑफ ₹500 अवेलेबल इन द मार्केट। 500 रुपए का कीमत का मोबाइल फोन आसानी से मिल जाता है, महंगे से महंगे 2 लाख रुपए के भी हैं टॉप ब्रांड्स के। पर कहने का मतलब है कि आज मोबाइल फोन कोई और साथ ही साथ हर एक घर में एक नहीं, एक से ज्यादा ही, इफ सपोज देयर आर 4 फैमिली मेंबर्स इन ईच हाउस, देयर आर 4 मोबाइल फोन्स दैट आर बीन यूज्ड इन ईच एंड एवरी हाउस। तो सोचिए ये सारी चीजें हैं, तो लोगों को ये बताइए, एंड दैट इज व्हाई मोबाइल फोन इज नॉट अ लग्जरी आइटम। Of course, in today's world, it is a necessity. It is a basic amenity, जैसे कि कुणाल ने rightly said earlier. And with this usage, daily exposure जो हो रहा है इन चीजों का इस्तेमाल करने से, तो of course long term health problems में increased heart risk, birth defects, tumor, cancer, and low sperm count, यानी कि infertility cases. If you observe middle-aged people, maybe senior citizens, तो कहाँ रहती है अपनी मोबाइल फोन रखने की? दे कीप देयर इन द शर्ट पॉकेट्स, टी शर्ट पॉकेट्स। ऑब्जर्व करिएगा आप ये चीजों को। और जो यंग, उनके वजह से उनके एज ब्रैकेट में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जबकि यंगस्टर्स में इतने नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यंगस्टर्स में कोई हार्ट अटैक के केसेस नहीं है, पर है, पर ज्यादा केसेस इस पर्टिकुलर में दिखाई देते हैं, दैट इज मिडिल एज्ड एज वेल एज सीनियर सिटीजन्स। जबकि एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस, जो यंगस्टर वो अपना मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं? अपने पैंट पॉकेट्स में, ट्राउजर पॉकेट्स में। अगर आप ऑब्जर्व करें तो किसी भी यंगस्टर्स को आप मोबाइल फोन अपने शर्ट पॉकेट में रखते हुए नहीं देखेंगे, ऑब्जर्व करिएगा ये चीज को। और इसकी वजह से यंगस्टर्स के अंदर जब मोबाइल फोन्स अपने जीन्स के फ्रंट या बैक पॉकेट्स में, ट्राउजर्स में रखते हैं, तो इसकी वजह से आगे चल के उनको स्पर्म काउंट कम हो जाता है, यानी कि शुक्राणु की गिनती कम हो जाती है। इसकी वजह से बैड स्पर्म क्वालिटी एंड इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ जाते हैं। And if you see, there are many couples in today's world who are going through infertility cases, जिसके बच्चे पैदा नहीं हो पाते, उनको बच्चे नहीं हो पाते, and there are a lot of infertility cases rising day by day. And इसका solution क्या निकला है? Of course, IVF centers, infertility clinics. In the last 20 years, we have seen so much of rise in infertility clinics and IVF centers all around us in the every corner of our lanes, by lanes everywhere. पर क्या 20 साल पहले कभी किसी ने कोई IVF centers, infertility clinics के बारे में सुना था? नहीं ना, किसी को पता तक नहीं था। If we talk about birth defects, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी there are many health problems that a pregnant woman goes through, and of course radiations की वजह से न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, जहां पर कई बार प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं
समय से पहले 6, 7, 8 मंथ्स में, या तो फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी के साथ पैदा होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल्स में काफी महीनों तक। बर्थ डिफेक्ट्स में भी ये प्रॉब्लम देखे गए हैं। ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स व्हिच इज इंक्रीजिंग रैपिडली और एंड वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स कि ये सब सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस इज नॉट द ओनली कॉज। द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग राइट नाउ, लाइफस्टाइल जो हमारा है, खाने पीने का तौर तरीका, सोने उठने बैठने का तौर तरीका, इसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ एडिशनल इसमें जो एक चीज और ऐड हो चुकी है, जुड़ चुकी है, वो है रेडिएशंस, जो इन सब बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। तो रेडिएशंस इज अगेन वन मोर कॉज व्हिच हैज बीन एडेड नाउ टू दिस इंक्रीजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो वी नीड टू ब्रिंग एन अवेयरनेस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, एंड एटलीस्ट रेडिएशन से बचने के लिए हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, तो इसके लिए क्यों ना हम अवेयरनेस क्रिएट करें, राइट? अगर जो चीजों का सॉल्यूशंस हमारे हाथों में, हमारे पास मौजूद है, तो व्हाई नॉट टू यूज दैट सॉल्यूशंस एंड व्हाई नॉट टू इम्प्लीमेंट एंड लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, एज नॉट ओनली बिकॉज कि ये जानकारी देनी है, पर एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों तक अवेयर। दिस इज व्हाट आई वुड रियली लाइक टू टेल यू ओवर हियर। और अगर हम देखें तो बच्चों में भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिकॉज छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर फ्रॉम द वेरी स्मॉल एज। बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है फ्रॉम द डे दे आर बोर्न टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। बचपन से लेकर 18 साल की उम्र तक जो उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है, तो इसी दौरान बच्चों का जो हेल्थ होता है वो काफी सेंसिटिव होता है। और आप देखें तो छोटे बच्चों में 5 साल तक उनके ब्रेन स्कल का थिकनेस इट इज वेरी थिन, यानी कि जस्ट 0.5 millimeter for a 5-year-old child. For a 10-year-old child, it is almost 1 mm. And for an adult above 18 years, it is 2 millimeters. And because of this region, because of the thinness of the brain skull thickness, बच्चों के अंदर मोबाइल रेडिएशंस बड़ों के मुकाबले is more effective 5 times. That is the reason why we use baby products, baby soaps, baby shampoo, baby product, baby oil, baby food. क्यों? Because बच्चों का शरीर नाजुक है, सेंसिटिव है, तो उसके लिए हम बच्चों का बेबी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं from the day they are born till at least age of 4 to 5 years, and after which we start giving them the habits of what we are using or what we are eating. राइट, यानी जो हम खा रहे हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीजों का उनको आदत डलवाते हैं। ये सारी चीजों के साथ लोगों को जानकारी दीजिए। बच्चों में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे गए, ADHD, which is attention deficit hyperactivity disorder syndrome. As the name says, attention deficit is nothing but focus ना कर पाना, concentrate नहीं कर पाना। Hyperactive disorder syndrome यानी कि becoming more aggressive, more stubborn, जिद्दी behavior, बहुत ज्यादा impatient हो जाना। और तो और बच्चों में ऑटिज्म जैसी बीमारी देखे जा रहे हैं। ऑटिज्म इज वन ऑफ द उसके जो सिम्टम्स हैं, जहाँ पर बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आप को खुल के बोल नहीं पाते, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स एज वेल। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें बच्चों में, दे प्रेफर टू स्टे अलोन, मिक्सअप नहीं होते, सोशलाइजिंग नहीं करते, एंड दिस ऑल थिंग्स आर राइजिंग डे बाय डे। हम रिपोर्ट्स देखे जाए, जो सर्वे किया गया था इन द 1970s, द रेशियो वाज आउट ऑफ 10,000 चिल्ड्रन इट वाज सीन इन वन चाइल्ड, whereas in 2012 the ratio had gone drastically to 50 children. Out of 50 children it was seen in one child. Can you see the difference from 10,000 to 50? See, ये सारी चीजें, and these reports are almost 8 to 9 years old report. Today we are in 2021, so imagine what would be the ratios accordingly. So this is why we need to create an awareness. Sometimes people do agree with this, sometimes people don't agree, but even if people are not ready to accept these things or facts or truth, so we need to educate them, and that is what is important. We need to create an awareness, right? We need to give them some references, proof, so that they are easily able to understand, and we need to educate them. That is what. Sharing this with you, of course I'm sure you can see these two images of a small children, जहाँ पर one small child जो एक छोटा बच्चा जो है उसके हाथ में आप देख रहे हैं एक सिगरेट जैसी चीज है, दूसरा बच्चा जो है जिसके हाथ में आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल जैसी। Now, so many people are over here, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैट बॉक्स में मुझे इसका सिर्फ जवाब लिख के भेजें, इफ यू कुड रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स टू मी कि which of the images is wrong, the child with the cigarette, that is image number 1, or the child with the mobile phone, that is image number 2. What do you think? The number of participants over here who are there, would like to request you, all of you, if you could just reply with your messages which image is wrong. Image number 1, which is a child with a cigarette in his hand, and child number 2, image number 2, which is a child with a mobile phone in his hand. Or if you think both the images are wrong, you can write it accordingly, either 1
2 or both? So I'm waiting for your, of course, answers. I would not be able to take so much of names because there are so many responses coming across. So thank you so very much, first of all, for responding. And of course, majority of you have written over here, both are equally harmful for health or both are wrong. Genuinely both. I'm getting so much of responses. So I'm so very much overwhelmed with so much of responses. Thank you once again for responding. And जैसे कि हम देख पा रहे हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग वाली जो तस्वीर है वो तो गलत है, बिकॉज उससे होने वाला जो नुकसान है वो तो हमें पता ही है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली विजिबल। पर जो दूसरी तस्वीर है जहां पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है ना, उसका नुकसान जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है। क्यों? बिकॉज जैसे आज बच्चे पैदा होते बराबर ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं टुडेज जनरेशन। तो सोचिए जब ये बच्चे पैदा होके बड़े होंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब तब जाके हमें पता चलेगा कि इसका क्या नुकसान हुआ है। बिकॉज आज के वक्त में छोटे बच्चे बॉर्न होते बराबर ही सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इस चीजों से घिरे हैं, सराउंडेड है, और हम कुछ ही महीनों में उनके साथ ये चीजें इस्तेमाल करते हैं या उन्हें दे देते हैं। इमेजिन अगर कोई बच्चा जिद करता है किसी चीज को लेके और अगर हम उनकी जिद पूरी नहीं करते तो व्हाट डज ही डू? He gets more aggressive, he gets more stubborn, right? जिद्दी बिहेवियर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। अगर वो ऐसी चीजें कर रहा है और हम उनकी जिद पूरी नहीं कर रहे बच्चों की, तो क्या हम बच्चों के हाथ में एक सिगरेट थमाते हैं? नहीं थमाते ना, वो गलत है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पर हम मोबाइल आसानी से थमा देते हैं बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन उनका ध्यान चेंज करने के लिए, ये करने के लिए। तो सोचिए कि हम कितना आसानी से बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन ये सारी चीजें दे रहे हैं, और यही चीज हमें बतानी है। और आज के वक्त में ऑफ कोर्स यू योरसेल्फ इज सच अ वंडरफुल स्कूल, जो आप यहाँ पर हैं, तो आप भी देख सकते हैं कि हम जब घर पे बैठ के आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन, स्कूल से अटेंड कर रहे हैं, सो दे आर यूजिंग मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और मे बी टैब्स, एंड ऑफ कोर्स विद अ 4G कनेक्शन, दैट इज डाटा नेटवर्क, और आइदर मे बी विद देयर वाईफाई कनेक्शंस एट देयर होम। और जब व्हेन स्मॉल चिल्ड्रन यूजिंग ऑल सच इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर 4 to 5 hours और मोर, मे बी पढ़ाई के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उसके बाद उनको थोड़ा सा ऑफ कोर्स रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो वापस उनको मोबाइल देते हैं हाथ में या चीजें थमाते हैं, अगेन दे आर यूजिंग दैट फोन्स। तो ये सब चीजों का उनके ऊपर क्या नुकसान होगा। सो दैट इज व्हाई ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ अगर हम कुछ रेफरेंसेस की बात करें, जैसे कि लोग जो इसको जानने के बाद ये मानने को तैयार नहीं होते, सो द वेरी फर्स्ट रेफरेंस इज WHO, which is World Health Organization. I'm sure you all know this name, WHO. World Health Organization in the year 2011 had already said, along with IARC, which is International Agency for Research on Cancer, कि electromagnetic fields are possibly carcinogenic. Carcinogenic is possibly cancerous. जी हाँ, इसको possibly cancerous कहा गया है इन 2011 में WHO ने IARC के साथ मिलके। इतना ही नहीं, in the year 2015 39 countries had participated, and from these 39 countries 190 scientists has taken initiatives and they submitted an appeal. The name of the appeal was International Scientist Appeal to United Nations Secretary General, or it was published over there and prove किया गया था कि रेडिएशंस के जरिए कैंसर होता है। तो दिस आर द स्टेप्स दैट यू नो दैट हैज बीन टेकन, एंड अवेयरनेस में रेफरेंसेस ये सारी चीजें हैं। देयर आर मेनी मोर सच लाइक डॉक्टर मैग्डा हवस, शी इज अ वेरी लीडिंग साइंटिस्ट एंड वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डॉक्टर मैग्डा हवस। और उनका मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर द सिगरेट्स ऑफ 21st सेंचुरी। जी हाँ, उनका मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो 21वीं सदी के सिगरेट स्मोकिंग के बराबर है, उनका ये चीज है। डॉक्टर एंड्रू वेल, जो आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ही हिमसेल्फ सेज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन मे बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी हैज प्रोड्यूस्ड दिस सेंचुरी, ऑल द मोर डेंजरस बिकॉज इट्स इनविजिबल एंड इनसेंसिबल, यानी कि ना दिखाई देता है और ना ही हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द रेफरेंसेस व्हिच आई शेयर्ड विद यू। देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर टेकिंग पार्ट एंड हैव टेकन सम इनिशिएटिव्स लाइक फ्रांस, इजराइल एंड इटली। उन्होंने अपने देश में छोटे बच्चों के जो नर्सरी, प्राइमरी, किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, वहां पर वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेस को बैन कर दिए। कनाडा, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पास किया था बच्चों को एनकरेज करते हुए कि लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे हैं वो लिमिट के अनुसार मोबाइल का इस्तेमाल करें, यानी कि मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। Belgium is a country where they have, instructed the mobile phone companies itself कि whenever they launch their new mobile phones, तो जब नए मोबाइल फोन्स लॉन्च करते हैं उसका जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट्स में लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चों को इस्तेमाल न करें इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये सब चीजें हैं जो बड़े बड़े देश कदम उठा रहे हैं। एंड वेरी कॉमन हमारे पास जो रेफरेंस है वो है ऑफ कोर्स हमारा मोबाइल फोन मैनुअल। और एवरीवन ओवर हियर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब मोबाइल फोन तो घर में इस्तेमाल करते ही हैं, या कभी ना कभी तो आप सभी ने मोबाइल खरीदा ही रहेगा, नया मोबाइल। तो मेरा आपसे सवाल है, जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, फिर से एक बार सवाल पूछूंगा, सिर्फ यस या नो में जवाब लिख के भेजिए और बताइए आपने कभी मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है? Have you ever read mobile phone manuals? If you have read it, reply it with yes. If you not, reply it with no. It's just a simple query.
अगर आपने मोबाइल फोन मैनुअल पढ़ा है तो यस लिख के भेजिए, अगर आपने मोबाइल फोन मैनुअल नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, नो लिख के भेजिए। दिस इज जस्ट एक जानकारी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जवाब क्या आ रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ एक ही जन ने यस लिखा है, बाकी अभी तक सारे जवाब नो आ रहे हैं। अगर इस तरह से सवाल आप लोगों से और भी पूछते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 लोगों से ऐसा सवाल करते हैं सर्वे करने पर, 100 लोगों को भी आप काउंट करके उनमें सवाल पूछेंगे तो आई एम श्योर आउट ऑफ विच 95 या 96 लोग आपसे यही जवाब देंगे कि हमने मोबाइल फोन मैनुअल नहीं पढ़ा है। Hardly 4 or 5 people would say कि yes we have read it, but that too not perfectly या properly। जैसे कि यहाँ पर भी जवाब में हार्डली मुझे 2 या 3 ही yes दिखे, बाकी मैक्सिमम सब जवाब नो में आ रहा है। So this is just an thing which I wanted to know and आपके साथ एक ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। You know what does mobile phone manual say? Mobile phone manuals always say कि whenever you use your mobile phone, use it with a ear set, यानी कि हेडफोन्स के साथ इस्तेमाल करें। ये कानों में ईयरफोन्स लगा के, हेडसेट लगा के उसका इस्तेमाल करें। If you are not able to use your headphones because of any of the reasons, always keep your mobile phone away from your body and from your ear while speaking। जब आप फोन पे बात करते हैं तो अपने मोबाइल को अपने कानों से चिपका के ना रखें, थोड़ा सा गैप मेंटेन करें, एटलीस्ट अ गैप ऑफ 1.5 centimeter to 2 centimeter, that is 15 mm to 20 mm। टेक्स्ट मोर देन यू टॉक, यानी छोटे छोटे कॉल्स की जगह पे आप उसको टेक्स्ट मैसेजेस पे कन्वर्ट करें, और जो सजेस्टेड टॉक टाइम है वो 6 मिनट्स पर आवर के सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट। नाउ टेल मी वेदर आर वी एबल टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर रिटन इन द मैनुअल? ऑफ कोर्स वी आर नॉट फॉलोइंग इट। अगर हमारे किसी बॉस का, क्लाइंट का, दोस्त का, रिश्तेदार का, फैमिली मेंबर का फोन आ जाए तो क्या हम उनसे ये चीज कह सकते हैं कि अब 1 घंटे का 6 मिनट हो चुका है और हम अगले घंटे 6 मिनट दोबारा बात करेंगे? नहीं ना, वी कांट कट डाउन द कॉल्स डायरेक्टली, और हम कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो व्हेन दिस थिंग्स आर अनअवॉइडेबल और वेदर वी आर नॉट एबल टू follow such things, so that is why we need to have some kind of protection, precaution, prevention, right? And that is what we are over here for। दोस्तों, it could be your mobile phones, it could be your laptops, tabs, Wi-Fi routers। Always go through the mobile manuals which they have and get ready, and उसको उस हिसाब से पढ़ के इस्तेमाल करें और साथ में लोगों तक भी जानकारी शेयर करें। We spoke about so many different countries। I would like to share one more name of the country which is USA, that is America। अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में एक शहर है which is बर्कले सिटी, और जहां पर एक लॉ पास हुआ है जिसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस, एंड दिस ऑर्डिनेंस इज सेल फोन रेडिएशन राइट टू नो ऑर्डिनेंस। जहां पर जितने भी कस्टमर्स मोबाइल के दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, न्यू मोबाइल्स खरीदने जाते हैं, द स्टोर ओनर जो है वो, उसकी जिम्मेदारी है, इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी टू गिव अ वार्निंग लेबल, एक वार्निंग लेबल प्रिंट करके देना आए हुए कस्टमर्स को, जहां पर लिखा रहता है उस वार्निंग लेबल में कि दिस डिवाइस एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक्सपोजर टू व्हिच मे कॉज ब्रेन कैंसर, यूजर्स स्पेशली चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन शुड कीप दिस डिवाइस अवे फ्रॉम द हेड एंड बॉडी। और ये जानकारी मिलने के बाद देन दे आर अलाउड टू purchase a new mobile phone। So imagine such kind of steps have been taken। So ये सारी चीजें हैं, लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। And of course our company which manufactures this products, Energy Environics, has gone through a research, of course clinical trial research along with AIMS। I'm sure AIMS आप सब जानते हैं, All India Institute of Medical Sciences and Research Center, which is in New Delhi। एंड यहाँ पर जो हमने क्लिनिकल ट्रायल किया था एम्स में अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर्स, द नेम ऑफ द डॉक्टर इज मेंशन्ड ओवर हियर इन द पॉइंट नंबर 1, व्हिच इज डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। शी इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन न्यूरोलॉजी एम्स में, एंड अंडर द गाइडेंस वी हैड डन दिस क्लिनिकल ट्रायल्स व्हिच वाज ऑन ब्रेन वेव्स, यानी कि ईईजी, जैसे कि ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारी हार्ट बीट देखने के लिए, राइट, पल्स मेजर करने के लिए, हार्ट बीट देखने के लिए ईसीजी होता है, उसी प्रकार हमारे ब्रेन में से जो सिग्नल्स निकलते हैं उसको मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए ईईजी किया जाता है, व्हिच इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और ये चीज हमने की थी with our product that was of course without Envirochip। हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बगैर हमने मोबाइल पे उन लोगों से बात करने को कहा और उसके इफेक्ट्स देखे। दूसरी बार में उन्हीं लोगों के मोबाइल पे ये प्रोडक्ट फिक्स किया गया था, अप्लाई किया गया था, और उसके बाद फिर उनके इफेक्ट्स देखे गए थे। और दोनों ही बार में हमने जब उनसे 5-5 मिनट के फोन कॉल पे बात करने को कहा, द डिटेल्स व्हिच वाज एनालाइज्ड लेटर ऑन द डाटा वाज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 4 and 5। इट इज, यू कैन सी दैट कि हमारे ब्रेन से 4 किस्म के सिग्नल्स निकलते हैं। Our brain emits 4 kind of signals which is alpha, theta, beta and delta। Out of these 4 waves, alpha और theta waves जो है ना, वो हमारे ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स रखने में मदद करते हैं। And when of course they were speaking on a mobile phone without this fixing this Envirochip, so this radiations cause stress inside our body, and this, because of the stress, our mind was not stable, it was disturbed, you can say it was the waves which are coming out, especially alpha and theta waves, they were quite fluctuating a lot, and this has been mentioned in point number 4। and after which जब मोबाइल पे Envirochip अप्लाई किया गया था, उसके बाद ये टेस्ट फिर दोबारा किए गए थे, तो इसके रिजल्ट्स पॉइंट नंबर 5 में खुद डॉक्टर त्रिपाठी जी ने मेंशन किया हुआ है, which is in point number 5।
as per the experiments done by us at AIMS, the alpha theta wave showed more improvement when the mobile phone was fixed with Envirochip as against the use of mobile phone without the same. यानी कि तब रेडिएशंस मौजूद थे पर उसका नुकसान हमारे शरीर पे नहीं हुआ था, कोई स्ट्रेस तनाव जनरेट नहीं हुआ था और इसी के कारण हमारा माइंड जो है ना वो रिलैक्स था, इट वाज स्टेबल और ये वेव्स भी स्टेबल थे, फ्लक्चुएट नहीं हुए थे. तो ये सारी चीजें हैं. एंड दिस आर्टिकल लेट मी टेल यू वाज published in the leading Times of India newspaper on 28th January 2021 to create an awareness amongst everyone. जहां तक ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके ये लोगों को जानकारी हमने पहुंचाई है. अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस फ्रेंड्स company manufactures are these products which you can see on the screen, which is environment. Of course, it is a protection against external sources of radiations like mobile towers, routers, boosters. Why? Because अगर अपने घर के छत पे मोबाइल एंटीना लग गया हो, पास के पड़ोस के बिल्डिंग के टेरेस पे मोबाइल एंटीना लग गया हो, तो I call this uncontrollable sources of radiations. Similarly, हमारे घर में जो वाईफाई सिग्नल्स मौजूद है, जो मैंने आपके साथ इमेज शेयर किया था नेबर सराउंडिंग से, वो सिग्नल्स अगर घर में मौजूद है तो I call that unknown sources of radiation. So how to prevent yourself or keep yourself safe from all this uncontrollable and unknown source of radiations? So there is a solution which is Enviroglobe. This particular product, Enviroglobes, takes care of around 350 square feet area in your surroundings, in whichever area you keep in the open area. Of course, यहाँ पर भी आप रखते हैं 350 square feet area radiation correction का काम करता है, and it protects you from the harmful effects of radiations. We'll know how it works further again, but साथ ही साथ we do have specific this product which is Envirochip, which is specially for mobile phones, laptops and tabs as well as for Wi-Fi routers. Mobile phone pe, of course you can see it has to be just pasted on the back side of the mobile as you can see it on the screen. And of course we do have Envirochips, this products for laptop as well, where there's a set of 3 pieces for Envirochip for laptop, and again single Envirochip a bigger size for tablet or a Wi-Fi router as well. And of course these are all the different variants, like single mobile Envirochip for mobile, it comes in a family pack as well. Why family pack? That is because of set of 4 pieces, because every family has at least 4 family members, everyone is using mobile phones, so we have this pack of family packs as well. Laptop ke liye hai and Wi-Fi tab router ke liye hai. And how to fix this? For laptop, the bigger chip has to be pasted on the top side of the laptop, which is on the back side of the screen in the center, and similar identical small chips has to be pasted at the bottom of the laptop on the sides, on the center of the sides ki taraf mein. And this is how you put it across on a laptop. How you put it across on a Wi-Fi router or a tab. So of course it's a single chip, you can paste it on the back side of a tab in the center, or if you're using it on a router, you can put it on the top portion of a router in the center. So this is how it has to be applied. Of course the application is different, like for a mobile phone, of course for a laptop or Wi-Fi router or tab, but the work it does is the same. And what it does is it neutralizes the harmful effects of EMR, electromagnetic radiations. It reduces your stress levels up to 5%. As I said earlier, radiations causes stress inside our body, that is, it is causing damage inside our body by causing stress, biological नुकसान पहुंचा रहा है. तो उसकी वजह से जब बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा हो रहा है रेडिएशंस के जरिए, तो वो हमारे स्ट्रेस पल्स को हाई करता है, और पल्स अगर हाई होगा तो इट कॉजेज our immune system also to get weaker. See, there are different causes of reasons for stress. If we have a unhappy relationship, right? If we have a worried professional life, business or job, where our job is not secured, where our business is not working great, or if we have unhappy relationships in a family, or maybe with our spouse or family members or relatives or friends or whatever. So all these reasons are the reasons for stress, right? ये सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस तनाव पैदा करती है. पर इसके अलावा रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलता है वो भी स्ट्रेस तनाव पैदा करता है. इट इज कॉजिंग बायोलॉजिकली हमारे शरीर में स्ट्रेस तनाव पैदा कर रहा है. बिकॉज ये जब रेडिएशंस का जो नेचर है एक प्रकार का कांस्टेंट वेव्स, दैट इज नथिंग बट बेसिकली अ सेम काइंड ऑफ पैटर्न व्हिच इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज अ सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, दैट इज व्हाई इट इज सेड कांस्टेंट वेव्स, बट टेक्निकली वी कॉल इट एज साइनोसाइडल वेव्स, साइन वेव्स. ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलते हैं. Whereas our body pattern is random waves, which you can see over here, which is like which can be observed in a ECG, heartbeat, हमारे जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं हार्टबीट, इस प्रकार का. So ये चीजें हैं. और जब रेडिएशंस का सिग्नल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, जिसको हम कोशिकाएं कहते हैं, उसको डिस्टर्ब करता है. सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और वो सेल्स स्ट्रेस तनाव पैदा करते हैं. This is what it causes biological damage inside, harmful effects on our body, causing stress inside our body. And what our products are doing is we are not reducing, we are not deflecting or shielding it, we are just purifying it. Like जो उसका नुकसान हमारे शरीर पे वो हम होने नहीं दे रहे हैं, the harmful effects.
ये सारी चीजें आप लोगों को हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों को. एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज दिस प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ, अगर ये चीज किस तरह से काम कर रहा है, हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स. It does not have any batteries, circuits, wiring or software. This product's Envirochip and Globe is made up of natural inert materials. Inert materials are those materials which do not react in an environment, in your surroundings. So it is eco-friendly products, natural. इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता हमारे शरीर पे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे. इनर्ट मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर्स है. सो दिस कॉम्बिनेशन, द फॉर्मुलेशन, द वे इट हैज बीन मेड, द परसेंटेज वाइज combination of this inert materials, it is a patent technology as well. Our company has registered, इसको patent register किया with government of India so that nobody else can copy it as well. So this is made up of natural inert materials, and this is what it is. Enviroglobe, of course, is a product, as I said earlier, it covers 350 square feet area, which you can use it in your homes, in your bedroom, in your study room. Your children are, of course, studying over there, in your living rooms, office spaces, when you're working in your office, on your desk, in your travel car as well as, of course, in your travel places, further room, hotel, different cities as well, where there are multiple mobiles in the vicinity. Of course, there are electronic gadgets, multiple. Of course, there are company server rooms, or maybe there are more number of Wi-Fi connections available. So to protect yourself from all these radiations, we have these products, which is Envirochip, Enviroglobe, available for different range, from mobile, laptop, tab, and Wi-Fi routers. Especially for Enviroglobe, just one more thing I would like to add here. You can see it on the screen. It looks like a small stainless steel globe, a ball kind of thing. Of course, it's a of product. Since this inert materials का ये बना हुआ है, इसको चार्जिंग की जरूरत है, and it does not come with a charger or it is not an electronic gadget. So इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं? इसको आप चार्ज कर सकते हैं, सिंपल तरीका है. ये इनर्ट मटेरियल्स लाइट और हीट, गर्मी और प्रकाश मिलने से चार्ज हो जाते हैं. So either you can charge it in keeping it under the sunlight, hardly 15 minutes once in a week, or under artificial light, जैसे कि टेबल लैंप, फोकस लैंप है, बल्ब है, उसके नीचे रख सकते हैं, जैसे इमेजेस में आप देख सकते हैं. उसके नीचे less than 2 feet distance में उसको चार्ज करें, and that too not every day, just once in a week for 15 minutes. Inert materials are effective for the next 8 to 10 days. Effective रहता है, and again after 8 to 10 days you can charge it again for next 15 minutes only. So this is the most special thing about this product. It is a medically and scientifically tested products. Medically, Max Healthcare Hospital has got it tested on their employees and the many people. So they have given us this certificate, of course, Max Healthcare, that it reduces your stress levels, improves your pulse level, and CE certified. Of course, it's a world-class quality tested products, which tests have been conducted in Europe, of course, and after which we get the certificate CE, which is a marking of according to safety, health, and preventive measures. These are some of the additional testings. Max Healthcare CE certified, DB Technology Lab, Cambridge in United Kingdom. It has been tested on electromagnetic spectrum, where applying an Envirochip on a mobile or Wi-Fi router or a tab or a laptop does not reduce your signal strength, does not affect your working of the gadgets, anything as such. That's why it is, of course, it has been tested again for the green product basically. तो सिंगापुर में इसकी ग्रीन बिल्डिंग, सिंगापुर SGBC, which is Singapore Green Building Council certificate मौजूद है. तो it's a eco-friendly product, successful research aims के साथ, which I've already mentioned it to you. इसके research और reviews publish हुए हैं international online journals. Let me tell you, MIT is one of the leading institutes in America. Massachusetts Institute of Technology, इसके online journal में इसके बारे में इसकी technology publish की गई है public domain के लिए, public domain पर. JBISE, that is Journal of Biomedical Science and Engineering, and Landmark Research Journal, ये सारे journals में इसके बारे में जानकारी दी गई है, and this is what they have published over there. साथ ही साथ, let me just tell you, our company Synergy Environics has been working since last 13 years in this field of radiations, radiation management, radiation correction, radiation protection. So we do manufacture these products, that is Envirochip and Enviroglobe. At the same time, we do correct radiations. That kind of radiations are nothing but geopathic stress, that are ground radiations. What we spoke about today, or what we got information today about, was the radiations coming from electronic gadgets. Nothing but man-made radiations. But there is one more kind of radiations, which is natural radiations, जिसको ground radiations कहा जाता है, geopathic stress कहते हैं. तो वो जो जमीन में से मौजूद radiations होते हैं, उसके वजह से हमारी कंपनी रेडिएशन करेक्शन का काम करती है. हमने काम किया हुआ है चंडीगढ़ में SBP ग्रुप, जिसके साथ पूरे बिल्डिंग को पूरे रेडिएशन करेक्शन किया हुआ. उनके इस प्रोजेक्ट को गेटवे ऑफ ड्रीम्स, which is a residential complex which has been completely radiation corrected by we have worked with Piramal Group, and since more than 8 years, and उनके offices को और सब जगह हमने उनके पूरे offices को radiation correction किया हुआ है. This is the feedback what they have given us. These are some of the clients which you can see on the screen. Out of
100 companies in India. 25 companies have taken our services and we are continuing with them till date. Jindal Steelworks, SAIL, Steel Authority of India Limited, Gas Authority, GVK, GMR, Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Aditya Birla, Vatsila, Jaipur Institute of Management, Larsen and Toubro, Wokhard Hospitals, Doha Bank in Saudi Arabia, Qatar, Ford, GCM Shriram, Petronet LNG, Singapore Exchange, Vedanta. Hotel industries, we have ITC, Lalit and HRH group of hotels as well. We have completely radiation corrected their properties in all these locations: Bangalore, Jaipur, Chandigarh, Kolkata, Nai Delhi, Mumbai, Khajuraho, Goa, Srinagar, as well as London. And all these locations have been, their hotels have been radiation corrected by us: Gurgaon, New Delhi, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, Mumbai, Agra, Jaipur, Chennai, Goa, everywhere. And they have such kind of boards, informative boards on the reception area in the lobbies, where it is written positive vibes only. That means the guests who are staying in these hotels are completely staying in a radiation free, stress free zone, because this hotel complete property has been radiation corrected. For all the locations which we have all India for the hotels, we have covered 66 lakhs 85,600 square feet of their areas of all the hotels in India, which it will, of course, has all 3,500 plus rooms, and their officials, the employees which are working in this company, are more than 6,590, where we have given them a healthy space to work on, right? So we do all these things. And as well, Mumbai International Airport. Mumbai has two terminals, T1 and T2. So Mumbai International Airport, that is Chhatrapati Shivaji International Airport in Mumbai, the terminal T2 along with the GVK has been completely radiation corrected, so that people over here who are the travelers feel a stress-free and radiation-free zone. So T2 has been radiation corrected back. So these are the work which we have done in the last 13 years in 13 countries, more than 70 cities, and more than 2,500 plus projects. So thank you so very much. I'm really privileged and obliged because you gave me a chance to just create an awareness and let you all know about this radiation correction, radiation awareness program, as well as about the company, what our company does, and about our. So I really would like to thank once again Kunal Parmar. Thank you so much, Kunal, me here and giving me this time and privilege to speak to your people over here. Thank you so much, sir. First, let me settle down. After going through the presentation, I was like, radiation is such hazardous for us and for our environment. And sir, very informative, beautifully explained, and a wonderful session. And words are very less to show my gratitude towards you, sir. Thank you so much. So stepping to the end of this eminent program, I would like to call a sister from the school to come and share her views regarding this session. Over to you. Okay, so Nivedita ma'am, please can you come and share your views regarding this session? वो सही बात और अंदर भी जगह नहीं होगी और वो जगह जो मिली वो कोई काम. Yes. Ma'am. Hello. Yes. Hello. Yes, ma'am, you are audible. Yeah. Yes, Kunal, such a beautiful session you arranged, and we learn lots of things from sir. Because we also very much surprised to see this much of things happen due to the use of phones and the laptops, and it is very much means for children also it is very harmful. Such a beautiful information we get from your side. Thank you very much, sir, for your good informations. And we also upgraded ourselves to keep some distance with the phones and the laptops and all those things. And it is very much helpful for us. Thank you very much on behalf of the St. Xavier School, Mundra. Thank you so much, ma'am, for such a mere words. At last, I would like to show my gratitude towards the St. Xavier's organization, Mundra. Without your support and cooperation, this would not have been possible. And thank you, Gurubaksh sir, for giving your precious time to us. Thank you so much. And school, I will be sharing Google Forms with you. Please kindly do put your आप अपने views share कर सकते हैं. Okay, so end of the session. Stay safe, stay healthy, and stay protected.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Kunal, for once again for inviting me, and thank you, Nivedita Chaudhary, ma'am, for your wonderful appreciation, and for all of the participants who were here were attending this training session. Also recommend that you should be thinking further ahead on the lines of getting your school completely radiation corrected and using such radiation protection products for your family as well as for yourself and your family, and promote this as a social awareness to each and everyone. We have done many projects with the school as well, like Jaipuria Institute of Management, where all the 3 properties in Noida, Jaipur and Indore has been radiation corrected and passed. So there are many such things. Of course, thank you, Kunal, once again, and thank you everyone, and take care. Have a great weekend. Thank you, everyone. Hello, Thank you, everyone. Kunal. Have a nice time, Excuse me. everyone. Yeah.